PPT. All right, hello. We are live. Welcome back to another session with the Law Entrance YouTube channel. Today we are here with a very special session, guys. How many of you are here with me today? Quickly give us a response in the chat box and we shall start very soon. Okay, we have okay, so we have started getting confirmation. Vishal is saying hello, teachers. Divyansh is there. Okay, good evening, Divyansh. Okay, show familiar names. Deeptakshi, all of them are here. Yeah, Govind, we can go ahead. Yes, sir. All right, so let's start today's session. So today's session is very special in the sense that we are going to talk about how to unlock 20 extra marks in CLAT 2025. So if you are stuck at 70 marks, we'll talk about how to take you to 90. If you're stuck at 60, we'll talk about how to take you to 80, and you get the gist, right? Today we have Amitendra sir with me on the panel, and we also have Yuvraj sir with me on the panel. So very welcome both of you, and I'm hoping that we have a great session. Before we talk about today's session, Amitendra sir, I would like you to introduce our students to Race to NLU. Okay, thanks, Govind, and good evening once again, everyone. So good to see, and I can see certain questions coming. And so समझ में नहीं आ रहा है कैसे start करें preparation CLAT की. Don't worry, we are there. LST is there for you. And this is a very special session, as Govind spoke about. Actually, तो बहुत ही special है. So we'll talk about some strategies today, but more importantly, we'll keep it for the Sunday. So 18th of August, I'm sure most of you are aware you have already registered for the Race to NLUs, the Head Start. So this time, Race to NLUs is going to be bigger and much better, I would say. And we have divided the Race to NLU in three phases, and each of the phases will have its own way of teaching and learning actually, where you constantly keep on improving. So the first phase of the Race to NLU, and now what is this Race to NLU all about? I'm sure that's the question you might be having. So this is a strategy session where all the CL top gurus will be present with the students and will be sharing their idea of how to crack the CLAT examination. And with just three months, 3.5 months left, rather, I would say, what is the strategy that you can have for the examination? तो वो कौन सी ऐसी single strategy है which can help you crack the examination, which can help you improve the score, and that is what Race to NLUs is all about. So the first phase, which is the head start, is happening on 18th of August. Sunday को हो रहा है, morning 9:30 से लेके almost 4:30, not almost, I would say 5 PM तक सेशंस होंगे. बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड बीच में भूख भी लगेगी, तो हमने आधे घंटे का ब्रेक रखा है बिटवीन 1 to 1:30. उसी में टीचर्स भी ब्रेक लेंगे और स्टूडेंट्स भी ब्रेक लेंगे. इसके अलावा पूरे दिन विल हैव मैराथन सेशंस अबाउट स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक. जीपी सर होंगे, राहुल रेड्डी सर होंगे, जिन्होंने लास्ट क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 3 सिक्योर किया था. गोविंद सर, युवराज सर, मैं, सिद्धार्थ मेहता सर, प्रसन्न कामत सर, सारे गुरुज आने वाले हैं उस दिन एक प्लेटफॉर्म पे, एंड विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज अक्रॉस ऑल दी सेक्शंस. तो हर सेक्शन के बारे में बात होगी, किस तरीके से इंप्रूव करना है. एंड आई एम श्योर दोज हु हैव रजिस्टर्ड, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग द रेस टू एनएलयू टेस्ट, क्यूटी का टेस्ट, और रीडिंग सेक्शन का टेस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया. आपके मॉक्स टैब में जितने भी लिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको अवेलेबल है. जिन्होंने ज्वाइन किया है फॉर रेस टू एनएलयू उनको भी अवेलेबल है. तो बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है. कोशिश ये होगी कि कल 12 बजे तक टेस्ट कंप्लीट करो, और संडे को मॉर्निंग 9:30 लॉग इन करना है. यू विल रिसीव अ मेल एंड अ व्हाट्सएप टुमारो इवनिंग विच विल हैव द लिंक फॉर दी सेशन. तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, कहां पर ज्वाइन करना है. बैचेस में भी आपको, आपके सेंटर से भी आपको रिपोर्ट आ जाएगी, वो लिंक आ जाएगा. तो ये जो संडे होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल है, एंड रेस टू एनएलयू इज समथिंग विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस. बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हो. लिंक ऑलरेडी आपके चैट बॉक्स में भी आ गया है, कमेंट बॉक्स में भी आ गया है. यू कैन चेक आउट दैट एंड डेफिनेटली work on that. Swani, don't worry. Let us go through this session. Definitely आपका स्कोर इंप्रूव होगा बेटा. Don't worry at all. और संडे को डेफिनेटली सेशन अटेंड करो.
block your calendar, and I'm sure you'll, once you attend those sessions, you'll definitely have, you'll definitely see the improvement happening. हर साल students improve करते हैं, आप भी improve करोगे. Govind, let's go back and we'll go ahead with this session and then we can start. Absolutely, absolutely, sir. So as Amitendra sir said that this is just a precursor to Race to NLU. This is just the trailer, and picture अभी आनी बाकी है. Picture आ रही है Sunday को 9:30 बजे, and we hope all of you are there. This QR code is also on your screen. You can use this to register for Race to NLU if you haven't yet, and we'll move on with our presentation. All right. So firstly, we start with the basics, right? When you talk about the basics, we have a few points here which we'll go through. The first point is having a balanced and structured study plan, and it should be as per the pattern. So if you're preparing for CLAT, your plan should be as per the CLAT pattern. If you are also preparing for CLAT, you need to also preparing for ALET and OLETs, you also need to keep in mind your study plan with that respect, right? Now, that being said, how would you structure your study plan in a way that it's balanced? It's balanced not just with your other competitive exams, but also with your daily schedule, also with your board exams preparation, also with your midterm exam preparation, also with how you are spending your entire day. And this is the key to going towards a structured preparation. If you have a balanced timetable in mind, if you have allocated hours that okay, मैं सुबह इतने बजे से इतने बजे तक जीके पढ़ूंगा, देन मैं स्कूल से आके हिंदू एनालिसिस अटेंड करूंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं लेट से अपने वीक टॉपिक्स पे काम करूंगा, एंड देन आई विल प्रोबेबली लुक एट जीके रिवीजन, और आई विल प्रोबेबली सॉल्व अ मॉक टेस्ट, और आई विल प्रोबेबली डू अ मॉक एनालिसिस. इट डिपेंड्स ऑन योर स्वॉट एनालिसिस, जिसकी हम बात काफी बार कर चुके हैं इन प्रीवियस सेशंस. थोड़ी सी बात आज भी करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. I'll let Amitendra sir take the next couple of points. Yeah. So in fact, Govind, सबसे important चीज है which you picked up actually कि स्कूल के पहले और स्कूल के बाद का जो रूटीन है, that is very very important. But मैं एक चीज highlight करना चाहूँगा. One thing which is very important. See, guys, please understand. Today is what? Today is 16th, and we are exactly 3.5 months before the examination. यहाँ से बिल्कुल you have just 3.5 months, actually 105 days kind of, I would say. Now the problem is you have to make that call, and this is not going to be an easy one, but I have already spoken about this. देखो, half yearlies आने वाले हैं. I've already got getting questions from the students, sir, can I skip a couple of mocks, which I don't want you to actually, because this is going to be a very crucial phase. अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु आर लाइक वरीड अबाउट देयर यूनिट टेस्ट. अब यूनिट टेस्ट का तो कुछ नहीं कर सकते, मंडे को स्कूल ने टेस्ट रखा है तो रखा है, बट संडे को मॉक लिखना है, एनालिसिस करनी है, और साथ साथ में संडे या सैटरडे तुम्हें जीके का रिवीजन पूरे वीक का तो करना ही होगा. सो दैट यू कांट स्किप. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैंने पहले भी बोला है कि इस फेज में द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा खुद को, एज इन टर्म्स ऑफ कि स्कूल का जो एग्जाम है वो स्कूल का एग्जाम है, वो बोर्ड एग्जाम नहीं है. आई एम श्योर, और आपने उसके लिए भी बहुत अच्छी मेहनत की है ऑलरेडी, तो वो डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन दैट. बट दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू शिफ्ट योरसेल्फ टू द टॉप गियर, बिकॉज यहाँ से जो मोमेंटम बदलेगा उसी में आप एग्जाम क्रैक करने की बात कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकेंडली, जो रिसोर्सेज, गोविंद ने मेरे साथ पहले भी सेशन किया है, और दूसरे सेशन में गोविंद ने इसके बारे में काफी बार बात किया है. इनफैक्ट आई रिमेंबर सिद्धार्थ सर ने भी इसके बारे में बात किया कि देखो, जो रिसोर्सेज हैं उसको लिमिटेड रखो, बट बिल्कुल थॉरली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कुछ कंटेंट यहाँ से, कुछ कंटेंट यहाँ से नहीं कर सकते हो. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो दैट रिसोर्स, क्वालिटी रिसोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो समय है, ये समय है नेक्स्ट 3.5 months इज टू वेयर यू हैव टू consolidate your understanding. जो अब तक लर्निंग हुई है उसको कंसोलिडेट करो एंड पुट दैट टू यूज थ्रू द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट की जो स्ट्रैटेजी है उसको बिल्डअप करना बहुत ही important है. As somebody is saying, AI, artificial intelligence, yes, the artificial intelligence is getting burned out. Sir, feeling like burnout, of course. अभी देखो, पीछे रोबोट ने सुसाइड कर लिया, उसके पहले एक रोबोट ने थक करके गिर गया था. So all that is happening, and burnout happens. So those who are feeling burned out, I have a very small question for you. I'm sure each one of you use mobile or a laptop. जब मोबाइल और लैपटॉप हैंग करता है तो फिर क्या करते हो? Just answer me quickly. जब आपका मोबाइल या लैपटॉप हैंग करता है तो क्या करते हो? What is the step you take? Quick answers.
you restart. What you say is you reboot, and that happens with us on ना. कई बार हमें लगता है कि we are burned out, हमें प्रॉब्लम हो रही है, मतलब थकान लग रहा है कि नहीं हो सकता है मेरे से. All we have to do is reboot ourselves. That is important. So our mind is also behaving like a machine. We are putting it to use like a machine. मैं हम इसी तरह से अपने माइंड को कंडीशन कर रहे हैं. तो उसको भी कभी कभी रीस्टार्ट की जरूरत पड़ेगी. अब यहाँ पे रीस्टार्ट हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया. ब्रेक ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पढ़ाई नहीं की, हाफ डे ब्रेक ले लिया, गो वॉच अ मूवी, एंजॉय करो. काफी सारी मूवीज रिलीज हो रही है तो जाकर के एंजॉय करो. एक दिन मूवी देख लोगे 2 घंटे के लिए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा. बट दैट रीबूट इज नेसेसरी, वो इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी शुड रीबूट योर माइंड, और बीच में उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, वो करना पड़ेगा. बट कपल ऑफ थिंग्स यू कांट मिस आउट एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी इज कि मॉक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है. somebody raised a query to me कि सर मॉक स्किप कर दूं हाफ ईयरली में. मैंने कहा बिल्कुल नहीं, यू लूज आउट द मोमेंटम कंप्लीटली. नाउ द पेस हैज टू इंक्रीज, मॉक्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, तो डेफिनेटली अब तो सारे मॉक्स लिखने पड़ेंगे. और जैसे आगे जाओगे 3 मॉक्स हो जाएंगे वीक में, तो मॉक्स लिखना, बट लिखने से ज्यादा एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो ये तो बेसिक चीजें हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो तो डेफिनेटली करना पड़ेगा. एंड मैं बहुत सिंपली बोलूंगा, मेंटर्स की गाइडेंस फॉलो करो. वी हैव our own experience, but we learn from thousands of students every year. हर साल 10,000 बच्चे होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत लर्न करते हैं हम लोग भी उनके साथ. दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट. या गोविंद, युवराज, योर इनपुट्स. Yuvraj sir, please, your inputs. Yes, friends, as sir has rightly pointed out, ज़्यादा burnout में नहीं जाना है, relax होके. See, CLAT 3.5 months are left, so it's a marathon. Okay, it's not a sprint. तो एकदम ऐसे नहीं है कि you keep studying you'll go in a burnout. तो मैराथन में कैसे होता है, स्लो एंड स्टडी. ठीक है, जो मोमेंटम था उसको मेंटेन रखना है, और अगर लग रहा है कि थोड़ा है तो उसे पुश देना है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाना है. And as sir rightly pointed out, if you are going in a burnout, take a break, reboot yourself, but keep the momentum going. एकदम लंबा ब्रेक भी नहीं लेना है, वरना जो पुराना इतने समय तक पड़ा था, you'll start forgetting everything. ठीक है, but थोड़ा break is necessary. So analyze the strategy that you have been working before. Don't create a new strategy at the last time. Also remember this, क्योंकि जो आपका momentum एक set हो गया है, all of a sudden if you try to break it and create a new system, that won't work. सो जैसे चल रहे थे वैसे चलो, और अगर मेजर शिफ्ट लाना है अपने तरीके में, अपने पढ़ाई में, तो ब्रिंग इट राइट नाउ. डोंट टेक लास्ट स्टेप डिसीजंस. टेक द मॉक्स एज यू विल बी टेकिंग द क्लैट. ओके, सो कीप दिस इन माइंड. Yeah. Thank you so much, sir. I have a question from Himank. Himank, I'll take this question when we talk about GK exclusively in this particular presentation कि backlog कैसे cover करना है. I have a point on this and we'll definitely talk about this. Moving forward, the second point is about conceptual understanding. अगर अभी तक if you have weak concepts, if you are struggling with any particular topic or any particular subject, now is the time to attack it. Now is the time to double down on it. Now is the time to counter it. अभी नहीं करोगे तो फिर जाएगा, फिर क्लैट तक कभी नहीं हो पाएगा फिर वो. देन यू लूज आउट ऑन दोज मार्क्स विच यू कुड इजीली फेच इफ यू जस्ट ओवरकम योर फियर एंड डू योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से. मूविंग फॉरवर्ड, इसकी बात हम काफी ज्यादा कर चुके हैं कि यू नीड टू टेक अप योर टॉपिक टेस्ट, you need to take up your sectional test, and as Amitendra sir rightly said, you cannot miss your mock test at any cost. ठीक है, मिड टर्म आ रहा है, हाफ ईयरली आ रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी है, पेरेंट्स का प्रेशर है, दोस्तों से मिलने जाना है, घर में वेडिंग है, जो भी चल रहा है, मॉक टेस्ट इज पैरामाउंट. मॉक टेस्ट सबसे ऊपर है, मॉक टेस्ट भगवान है. उस दिन नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट दिन अटेम्प्ट करो, बट मॉक टेस्ट होना ही चाहिए किसी भी हाल में, बिकॉज फ्लो नहीं टूटना चाहिए, एज युवराज सर राइटली सेड. स्वॉट एनालिसिस की हम बात काफी ज्यादा कर चुके हैं एंड एनालिसिस की भी बात कर चुके हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड गाइस. ओके, सो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सब्जेक्ट वाइज गेम प्लान की. as both of these subjects I also cover on YT along with Savitri ma'am, तो मैं थोड़ा सा इन टॉपिक्स पे बात करता हूँ आपके साथ. लॉट ऑफ यू वर सेइंग लॉजिकल में दिक्कत आ रही है एंड यू फेस इश्यूज विद लॉजिकल रीजनिंग ऑप्शंस, यू एलिमिनेटेड डाउन टू 2 ऑप्शंस एंड देन लास्ट में फिर फंस जाता है. इंग्लिश की अगर मैं बात करूं सबसे स्टार्टिंग में, उसके बाद लॉजिकल की बात करते हैं. इंग्लिश में द फर्स्ट पॉइंट इज हैविंग योर ग्रामर इन प्लेस. अगर ग्रामर इज नॉट इन प्लेस, यू विल स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, यू विल स्ट्रगल विद सॉल्विंग द क्वेश्चंस. सो इफ ग्रामर इज नॉट इन प्लेस, go to standard books, Renan Martin, all of that. You have CL resources as well. Go to them and make sure your grammar is to the point.
Next, vocabulary is a constant exercise which you will have to do along with your newspaper editorials, along with your vocabulary books, along with my Hindu analysis sessions where I talk about vocabulary a little bit. So vocab is an ongoing process. It would keep on going. It's a blue ocean. It would never end. But at the same time, you need to keep on working on your reading speed. That is also important because in fact, four of the sections in the CLAT exam are now reading intensive, are passage based in nature. So reading becomes very important. The faster you read, the faster you process, the faster you are able to solve those questions. And the faster you're able to solve those questions, the more time you have for difficult questions, and the more marks you score, and the better rank you get, and the better college you get, and the better life you have. So you get the drill, right? Now, the third point is exactly what your pain point is. Ki दो options में आके I get stuck and then I choose the wrong option. Now, this particularly happens because of two primary reasons. One is you misinterpret the question. Question is saying ABC, you interpret it as XYZ. That happens a lot when I take the YT live of logical reasoning practice questions. You realize it once we solve the question that you probably understood it partly correctly, but you missed out on probably a relevant detail, or you missed out on a possible fact, or you missed out on just one word which made the difference in your answer. So very important point is reading all relevant details. I'm not saying all the details because all the details are always not required to solve the questions. I recommend you to skim read the passage initially so that you know that questions का answer कहाँ पे and वही वाली read details आपको अच्छे से करनी है. And do not misinterpret the question. Do not go beyond the scope of the question. These are key things which would help you increase your accuracy. इसको और ज़्यादा enhance कैसे करना है और ज़्यादा डिटेल में कैसे करना है उसकी बात हम संडे को डिटेल में करेंगे in the RT and NLU session. So make sure you tune into that. Next is a mistake which a lot of aspirants do, a lot of students do, which they take a question on their ego कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं सॉल्व हुआ, इसकी तो मैंने प्रैक्टिस करी, इसको तो मैंने टॉपिक टेस्ट में किया था, सेक्शनल टेस्ट में किया था, इस टाइप के क्वेश्चन में क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा. दे गेट स्टक ऑन अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन विच यू आर मेंट टू लीव. इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन विच वाज मेंट टू वेस्ट योर टाइम. So don't waste too much time on complicated questions. It's okay to skip some questions. It's okay to not do 120 out of 120 questions. It's a competitive exam. It's not a school exam where you have to attempt 100% of the paper. You attempt 90% of the paper, or whatever the difficulty level of the paper is, accordingly your attempt should be. And don't fret about one or two questions. Don't take them on your ego. Don't get stuck on them. And lastly, the advice which is applicable to all the sections is practice and analysis is the only key to success. And it is even more important for the sections of English and logical reasoning, because once you consolidate your concept, then practice is the only thing which is keeping you away from a really good score in English and logical reasoning. Both of them are really scoring sections, and once you get your concepts right and you practice right, you are going to score really well in these two sections. If you have any doubts, you can ask in the comment section while Amitendra sir would talk to you about the quant section. सर यहाँ विशाल का एक क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग गाइडेंस फॉर मेमोराइजिंग जीके. Okay, we'll come to that, Yuvraj. Memorizing, I hope he's not working at looking towards cramming GK. So memorizing becomes easier when we do the revision, actually. So, anyways, so quantitative techniques is like, see, quant is all about practice. Like any other section, you are devoting time. Now, I do understand quant is one area, जो maths है एक ऐसा area है जहाँ पे fear बहुत लोगों को होता है. And my experience over the last 19 years, not just CLAT, but CLAT के पहले भी जब exams होते थे, students were definitely really worried about this particular section. But over the years, it is very much known fact today कि अगर quantitative techniques अच्छा है तो better NLUs के allotment के chances हमेशा high रहते हैं. आप कितना भी अच्छा करके आओ, लेकिन QT के बिना आपको अच्छे NLUs नहीं मिलेंगे. Now the point here is majority of the student commit only one mistake, which is they choose to ignore quantitative techniques while during the preparation as well as when they are attempting the mocks or when they are writing the actual paper. तो वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, if you look at the quantitative techniques as mathematics, then the problem will be there. Look at just as those few areas which you have to cover, and primarily it is arithmetic which is getting covered in the quantitative techniques, and you don't need to work or spend an hour every day like other section. Even if you manage on a weekly basis just around 3 and 4 hours, which could be every alternate day, if you spend 1 hour,
that is good enough. But the point is you have to have that continuity कि अगर कर रहे हैं तो alternate day पे definitely कर रहे हैं, वो बहुत ही important होता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. और वो फियर थोड़े दिनों के लिए साइड में रख दो. आई एम श्योर द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, जैसे ही तुम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे, यू विल सडनली रियलाइज दैट आई कैन डू इट. इट इज जस्ट अबाउट दैट रियलाइजेशन. जब तक हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन देखेंगे नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम. एंड यू नो व्हाट इज द सोर्स आई विल रिकमेंड? कुछ इधर उधर नहीं करना है, फंडा बुक उठाओ. इसके अलावा जस्ट अभी तक कितने मॉक्स हो गए? 22 प्राइम मॉक्स हो चुके हैं. इसके अलावा 6 वार्म अप मॉक्स थे. इतने सारे मॉक्स है, इसमें से आईलेट के 4 हटा दो, तो आप बाकी सारे जो 18 मॉक्स हैं क्लैट के, उसका क्यूटी सेक्शन उठाओ और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, जितने कर सकते हो. डू इट दैट वे. I'm sure that will help you, or you can easily score 7 to 8 marks. So in quant has always been, mathematics has always been about practice. जो practice करते हैं वो हमेशा अच्छा रहता है, उनका fear नहीं आता है. जो नहीं करते हैं वो fear develop होता है. तो उसको दूर कर सकते हैं. अभी भी बहुत समय है. अगर आप 1 घंटा दे सकते हो on an alternate day basis, that is good enough. Solving questions from the earlier mocks, that is just what you have to do. नो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आर एट ऑल रिक्वायर्ड. और आगे जितने आने वाले मॉक्स हैं उसका क्यूटी सेक्शन सॉल्व करते हैं. जीके की अगर बात करें, गोविंद, वी कैन मूव टू द जीके सेक्शन एंड देन वी कैन कम टू. अगर हम जीके की बात करते हैं, अब देखो जीके में मैं पहले भी सेशन कर चुका हूं इसी चैनल पे, बैकलॉग्स के ऊपर मैं पहले भी बता चुका हूं, एनालिसिस में भी हमने बात किया है. तो जीके का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं, जो फर्स्ट सोर्स है वो है न्यूज़पेपर. Hindu is the best source you can go ahead with. If not, you are not comfortable. Sometimes हम हर तरीके के writing style को नहीं पसंद करते हैं, तो that's okay. Indian Express is definitely an alternative, but Hindu definitely helps. और ये दोनों न्यूज़पेपर काफी अच्छे हैं. कोई एक उठाओ, दोनों उठाने की जरूरत नहीं है. ये जो फर्स्ट सोर्स है इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. द नेक्स्ट बेस्ट सोर्स इज यू हैव द 2 मंथन्स, that you should definitely not ignore at all. Somebody raised a question, well, manthan is good enough but not complete. In GK, if you say not complete, you won't find any other resource also to be complete. Nothing can be complete. Well, GK is like that only. If you ask my definition of GK, it is anything under the sun. That's how I would define GK. But last year we did sessions where it was a complete hit with the CLAT paper. So please understand that GK still is predictable. Well, Govind sir may not like it, but मुझे लगता है RC आप predict नहीं कर सकते हो, GK आप फिर भी predict कर सकते हो. RC में नहीं पता है कहाँ enter करेंगे, कौन सा source होगा, कौन सा novel का excerpt होगा. Nobody knows. यहाँ फिर भी पता है कि कुछ workout करेंगे तो ये events के likelihood ज़्यादा है. So that is another, and one of the sources which everybody ignores, you know, Govind, सबसे बड़ा source कौन सा जो ignore करते हैं वो mock होता है. एक बार mock लिख लिया तो दोबारा उसको visit नहीं करना चाहते हैं कि मैंने तो क्वेश्चन देख लिया. वो मॉक्स जितने हैं और आगे आने वाले मॉक्स हैं, अगर आप उसको ढंग से प्रैक्टिस करते रहो, दोबारा उसको विजिट करते हो एज रिविजन ऑन अ रेगुलर बेसिस, पहले फोर्टनाइटली फिर मंथली, believe me, nothing will be left out to a larger extent actually, while still unpredictable, but नहीं होगा. तो पहले तो ये फियर हटाओ. दूसरा, बैकलॉग बार बार बात करते रहेंगे, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा. अगर बैकलॉग कंप्लीट करना है तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज अभी से नेक्स्ट 15 डेज में मुझे पिछले 2 महीने को कवर करना होगा. अब इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ. एंड देन वंस आई एम इनटू सितंबर, उसके सितंबर के पहले 15 डेज में, व्हिच मींस यू हैव टू गिव दैट एक्स्ट्रा आवर्स. यू कैन नॉट वर्क लाइक कि मैं जितना समय दे रहा हूं उतने में बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा. वो फिर होगा तो किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर होगा, उसके कॉस्ट पे होगा, फिर वो सब्जेक्ट सफर करेगा. तो 1 घंटा डेली का एक्स्ट्रा देना होगा. नाउ यू हैव टू मैनेज दैट टाइम. रेलेवेंट टॉपिक्स को फिल्टर करो. देखो, इसके लिए ही हमने जीके इनसाइट भी शुरू कर दिया है 6 बजे शाम को. वो वॉच करते हो तो काफी हद तक वहां पे हेल्प मिल जाता है. वो दैट इज इंपॉर्टेंट. रिसर्च करना तुम लोग सीख चुके हो ऑलरेडी. तो आई थिंक एवरीथिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस. फर्स्ट थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस. द सेकंड थिंग इज, अगर कहीं लगता है बैकलॉग है तो उसको कवर करो. एंड डेफिनेटली वील हैव मोर सेशंस अराउंड इट एक्चुअली. तो वो हम आगे चल के और सेशंस करेंगे. रिविजन को फॉरगेट नहीं करना है. रिविजन हर 15 वीकली बेसिस होना चाहिए, और 15 डेज पे तो डेफिनेटली मेगा रिवीजन टाइप से होना चाहिए, जिस दिन मैं 2 घंटे शायद एक्स्ट्रा लगा करके वो काम कर रहा हूँ. मैं बार बार बोलता हूँ, छुट्टियां इज एन अपॉर्चुनिटी. अभी मंडे को मैं अपॉर्चुनिटी, अगर इफ आई एम इन योर प्लेस, मंडे इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. राखी की छुट्टी है. विल एंजॉय द फेस्टिवल. डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, बट विल एंजॉय. 2 घंटे एंजॉय करेंगे, बट 10 घंटे पढ़ेंगे भी. दैट्स हाउ आई वुड लुक एट.
नेक्स्ट मंडे फिर छुट्टी मिलेगी शायद बहुत लोगों को जन्माष्टमी की, मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने होंगे जहां पे मैं 2 घंटे के बजाय 10 घंटे पढ़ सकता हूँ। स्कूल नहीं जाना है 8 घंटे मुझे, आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स हाउ आई वुड लुक एट इट। एंड डेफिनेटली सारी स्ट्रैटेजी हम रिवील करेंगे। रेस टू एनएलयू नहीं रजिस्टर किया तो बहुत कुछ मिस करने वाले हो। 18 अगस्त अभी रजिस्टर कर लेना। सेशन के बाद गोविंद सर दोबारा क्यूआर कोड दिखाएंगे, दोबारा लिंक दिखाएंगे, डेफिनेटली रजिस्टर कर। युवराज सर, लीगल। All right. So, Kuvin, can you just switch on to the slide on legal? Okay. तो स्टूडेंट्स लीगल के लिए आई वुड एडवाइस कि बिकॉज दिस इज़ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो राइट नाउ इट इज़ अगस्त, तो जैसे ही आपका दिसंबर 1 को पेपर है तो एटलीस्ट 1 मंथ आई वुड से कि कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए। क्योंकि होता क्या, इफ़ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट एंड यू हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट 6-7 मंथ सीरियसली, उस समय जैसे जैसे क्लैट पास आता जाएगा, मेंटल प्रेशर आता जाएगा, बाकी टॉपिक्स का भी प्रेशर आएगा। एंड इफ़ यू आर स्टडिंग अ न्यू टॉपिक, एंटायरली न्यू टॉपिक इन लीगल, तो वो बिकॉज यू नो लीगल में हर चीज़ इंटरलिंक्ड होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 या कोई क्रिमिनल लॉ का सेल्फ डिफेंस कहीं टॉर्ट्स में फिक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई पॉइंट कहीं पे फिक्स होगा, तो यू मे गेट टोटली कंफ्यूज। इसीलिए 1 मंथ बिफोर क्लैट आप स्किप कर सकते हैं एनी न्यू टॉपिक। यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडी, उसको आप और कॉन्क्रेटाइज करिए। ओके, तो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मैनी स्टूडेंट्स मिस आउट। अगर आपको नया पढ़ना है, यू थिंक सिलेबस इज लेफ्ट फॉर लीगल, अभी कंप्लीट करिए, बट एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर कुछ भी नया मत पढ़िए। वट एवर यू हैव स्टडीड, ट्राई टू कॉन्क्रेटाइज ऑन इट। और इन केस कुछ ऐसा आ जाता है विच विल बी अ प्रोबेबिलिटी जो आपने नहीं पढ़ा है, यू अप्लाई योर बेसिक रीजनेबल वाला नॉलेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि जस्ट इन केस आपने पहली बार पढ़ा हो उसको पढ़ो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि यू आर नॉट द ओनली वन। अगर वो आपके लिए नया है तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी नया है। तो हमें कोई 120 आउट ऑफ 120 नहीं लाना है, हमें बस क्रैक करना है एग्जाम। तो कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता है, कितना भी पढ़ लो। जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी इस साल, वो भी 120 आउट ऑफ 120 नहीं लाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसने भी छोड़े होंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसने भी गलत किए होंगे। तो रिमेंबर दैट you have to just outperform your neighbor. That is the strategy to crack any competitive exam. ठीक है। Second point, keep practicing passage based questions. डोंट लीव द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस छोड़ी, हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे लीगल में, तो आप सोचो कि अरे लीगल में तो अच्छे आ रहे हैं, लीगल छोड़ देता हूँ, अब मैं क्वांट को करता हूँ। अगर आपने एकदम छोड़ दिया 1 महीने के लिए, आपका एकदम फ्लो टूट जाएगा। फ्लो को नहीं तोड़ना है। ये कर सकते हैं कि लीगल को अगर 2 घंटे दे रहे हैं तो लीगल को आधा घंटा दीजिए, क्वांट को ज़्यादा दे दीजिए, जीके को ज़्यादा दीजिए, बट डोंट ब्रेक योर फ्लो। एकदम से कोई भी टॉपिक मत छोड़िए, यू विल फॉरगेट, देन एट द लास्ट मोमेंट यू विल फंबल, यू विल गेट एंग्जाइटी। Okay, and as the third point is saying, do not go into the depths of legal subject. Again, remember that you are not a lawyer, you will be studying 5 years after you crack CLAT. अभी they are only testing कि आपको basic legal knowledge है कि नहीं, whether you are able to apply basic legal principle to the fact situation and come to an answer. This is the only requirement. And lastly, legal major जो legal developments हो रहे हैं उस पर keep a track, because there is a probability कि the same judgments can be put up as legal reasoning questions in your CLAT paper. Okay, so this was all about legal, और उसके बाद जो भी extra चीज़ें that will be covering in the 18th August function. So I hand it Thank you over so to much, sir. Kovind. Thank you. Thank you for your valuable insights, sir. I'll address a couple of doubts before we move on to the next slide in the presentation. Kolapalli is saying, should we give more sectional tests like setting time limit and doing a set of passages like a test, or just practice passages one by one? The former approach, Kolapalli. You have to give the sectionals in a timed manner because you won't get unlimited time in the mock test or in the CLAT exam. So every topic test, every sectional test has to be timed, and you can give multiple sectionals one by one or consecutively, but all of them have to be timed and tracked. And of course, analysis is equally important. Rupa is saying how to increase reading speed. We have an exclusive video on introduction to reading comprehension where I've addressed this in detail. You'll find it on our YouTube channel on the live section. I'll also put it as an I button and as a link in the comment section of this particular video, so you can go and check that out, how to increase reading speed. We had a couple of people asking that. I'll take a couple of more questions. Arman is saying, how do I manage my speed? I come in with a burst of energy, but the time I reach RC, I feel tired and my speed and thinking take a toll. Any way to change this?
One way to change this is you have to experiment with your attempt strategy. You can try switching it around. You can try playing around with the sections, attempting some other section first and some other sections at last. Another approach could be do not like not completing a section as a whole and switching between sections during the exam, so that you don't feel the fatigue, so that you still have that speed left with you. So for example, you could solve two GK passages and then solve one legal passage and then one logical passage, then come back and solve another GK passage. It's up to you. It's a offline exam. You can solve any question in any particular order. No one is stopping you in that. So you could try out that approach if that works out better for you. Let's see if we have other questions. Someone was asking me how to memorize GK, which was an interesting question. So Yes. simply just try to take down written notes. Writing is definitely equal to reading it 5 times, and make concise, proper notes, make neat notes so that you can use them for revision as well. And apart from that, try multiple revisions. Try to reread your current affairs at regular intervals. Like if you read something today, try to reread it after 3 days, then after 7 days, then after 10 days. That would be consolidated for sure. While you are reading, you can also use memory techniques, you can use mind maps, you can use any connections which helps you retain the information. You can use any funny linkages to remember information. So if I give you an example, let's say who is the new Prime Minister of UK, United Kingdom? Tell me in the chat box. Who's the new UK PM, guys? I'm hoping most of you know this answer. We have discussed this in the GK sessions. Keir Starmer, absolutely correct. So Keir Starmer replaced Rishi Sunak. So if I were to remember this as a CLAT aspirant, I would remember it कि पहले एक इंडियन ओरिजिन का बंदा था ऋषि सुनक, एंड फिर वो हट गया एंड उसकी जगह गोरा बंदा आ गया, तो मजा किरकिरा हो गया. तो किरकिरा से आप कीर याद कर सकते हो. So कीर से कीर स्टारमर आपको याद हो जाएगा. So this is how you just form connections. This is just a very simple example, but you can use it in any particular piece of information. Just make correlations. That would help you retain information for a longer manner. ठीक है, चलो, we'll just quickly go over to some final tips and advices which we have. I'll let sir take a couple of the points and then I'll wrap it up. Okay. Yuvraj sir, over to you. Yeah. So as Govind rightly pointed out, आपको balance study करना है, ठीक है? Don't compromise on CLAT due to boards. You have to maintain a balance between your school timing and your CLAT preparation. See, at the end of the day, अगर CLAT में होता है, तो school के marks बहुत ज़्यादा matter नहीं करते. And if you're a serious aspirant, of course it will happen. So do not miss out on studying GK and CA every day. See, GK का chances ज़्यादा होते हैं कि जब एग्जाम बन रहा होता है उसके 1-2 महीने पहले के, क्योंकि this is the time when actually the paper making process must be in, the system must have started. तो अभी जो हो रहा है, जो भी प्रोफेसर्स, टीचर्स, जो भी टीम उसमें इन्वॉल्व है क्वेश्चन मेकिंग में, बहुत चांसेस है कि ये पीरियड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वाले में ज़्यादा करंट अफेयर्स को वो इंक्लूड कर दें. तो अभी का जीके तो बिल्कुल मिस नहीं करना. एंड dive deep into the mock analysis, क्योंकि that is what you can find out कि मेरे में क्या weakness है, मेरी क्या strengths, and accordingly devise your strategy. Your strengths and your weaknesses are unique. Do not compare it with others. किसी का quant weak हो सकता है, किसी का strong हो सकता है. तो जो strategy जिसकी weak quant है उसकी अलग रहेगी और जिसका strong है quant उसकी अलग रहेगी. तो have your own personal strategy. और again remember, don't change it at the last moment. पेपर आया क्लैट का, सामने एकदम घबरा के कह रहे दिस इज समथिंग न्यू एंड ऑल ऑफ अ सडन यू चेंज योर स्ट्रेटजी. आप फंबल कर जाओगे एंड ऑल योर हार्ड वर्क विल गो इन वेस्ट. डू नॉट पैनिक. ओके, जैसे मॉक्स को अटेंड करते थे, थिंक क्लैट इज अनदर मॉक एंड डू इट. LST इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स. इट हैज़ द बेस्ट रिसोर्सेज. आपको हर तरह के मॉक से, इफ यू हैव टेकन द मॉक सीरियसली, एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन हैज बीन केटर्ड इन द मॉक. तो आपका जो क्लैट रहेगा, यू विल सी that it is another kind of an LST mock. So I think that is all the last tips, Govind, that I would like to give to students. Thank you so much, sir. I'll quickly share the QR code of registering for RTNLU if you have it yet. Meanwhile, I answer a few of the queries which were in the chat box. Kritik is saying, I always get economic passages wrong. How to overcome that? The only solution is reading more economic passages and getting well versed with the economic terms.
You could pick up any static GK book or resource and go through basic terms of microeconomics and macroeconomics, terms like inflation, deflation, all of that, and terms like GDP, GNP. Once you are well versed with these words, you'll feel more confident in approaching economic passages, and you won't find them that challenging. The only way is just reading more about it, being curious about it, and countering it by your curiosity. That's the only answer. We have a couple of more questions left. What is a good mock score for now? Again, I always answer this question as it depends. It depends on the difficulty level of the mock. A mock can be difficult and your average score could go down. A mock could be easy and score could go up. But if you are coming in the top 50, top 100 ranks in the CLLST, or if you're scoring above 90-95 percentile, that means your preparation is on the right track. You just need to work on your weak areas or whichever areas you're going wrong in the mock test, and that is a good metric to judge your performance. Ishita is saying how much time we should give each day. Now that almost 100 something days are left for CLAT, as much as possible. As much as possible. This is the final push which you have to give, and don't make yourself regret this at any point of life, any point of time in your life, that I did not give enough. If I would have done enough, I would have probably gotten into a better college or a better NLU or even an NLU, right? So give it your all, give maximum you can. And just the number of hours does not mean quality study. Try to put in quality hours. Even if you study for, let's say, 5 to 6 hours, make sure those are 100% productive hours rather than just opening a book and sitting in front of it for 10 hours. That won't help much, right? Reading speed I have answered. Timing on an entire section, which this we have also discussed in a previous video, in a strategy video. You can refer to that particular video. We'll link it in the comment section as well. All right, I think that brings us to the end of today's session. You guys can follow us on Instagram. You guys can join the Telegram channel. The handles are on your screen. And please make sure to like this particular video and subscribe the channel. Share this video with all your friends, batchmates, and CLAT aspirants. And if you haven't enrolled for RTNLU, now is the time. Now is the last opportunity. We have just one more day tomorrow left for RTNLU. And I'm hoping to see maximum participation from all of you. If you haven't registered, please do that on a priority ASAP. I have a couple of more questions. I'll take just one more question and then we'll wrap today's session. Okay. Mishika is saying, I've been alternating passage sections with not intense passage sections during mocks, but I still get a headache halfway through. How do I improve on this? The only way to improve on this is you'd have to get used to sitting for 2 hours at a stretch. So even if you are not attempting a mock test, I would advise you to attempt 3-4 sectionals consecutively. You could vary with the subjects. You could compile your own mock by using the sectional test. For example, you attempt one sectional of legal, one sectional of logic, one of GK, one of English, one of quant. That makes a mock test, right? You'd have to get used to your brain being at peak performance for 2 hours. This is indispensable. Legal Latin terms में बोलें तो this is your sine qua non. ठीक है, essential condition है, करना ही पड़ेगा. You have to understand कि 2 hours का peak focus चाहिए, and that comes with practice. It takes time. And you will get there. Okay. All right. Are the updates on WhatsApp channel very different from Telegram? Otherwise, I'll stick to Telegram. Both of them are same. You can join either of them, and both of them I would recommend. Both of them have same updates. That's not an issue. All right. Thank you for attending, guys. We had a really good time interacting with you, and we hope to see you all in RTNLU on Sunday. Thank you so much, Yuvraj sir, for sparing time for this session. Yes, Govind. Thanks a lot. Okay. See you guys. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye.